जी, तो फ्री रेडिकल्स इज अ टॉपिक ये कवर करेंगे आज से। और इसके बाद हम जो ट्रेंड था वो, अच्छा आपको याद है कि हमने जब एटम और मॉलिक्यूल पढ़ा था तो हमने रिएक्टिविटी डिस्कस की थी अकॉर्डिंग टू दी साइज और एटॉमिक रेडाई, वो चीज़ याद है? हाँ, तो आपका होमवर्क ये है कि जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया आप वो करोगी। और जो एटॉमिक रेडाई से रिलेटेड जो हमने ट्रेंड पढ़ा था कि हाउ आर एटॉमिक रेडाई गोइंग टू अफेक्ट द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स एंड व्हाट इज हैपनिंग अक्रॉस द पीरियड एंड अक्रॉस द ग्रुप, दैट यू आर गोइंग टू मेमोराइज, नॉट मेमोराइज, जस्ट रिवाइज द होल टॉपिक। क्योंकि उसी ट्रेंड की बेसिस पे मजीद बहुत सारे ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो हम डिस्कस करेंगे कल इंशाल्लाह। अभी मैं आपको जो टॉपिक कवर करवा रही हूँ वो है आपके पास फ्री रेडिकल। ठीक है, what do you understand by free radical? Have you ever heard the term before? No, I haven't heard it. Okay, radicals means, ये समझ लो आपके unpaired electrons. Unpaired electron का मतलब obviously electrons are always going to be placed in pairs, right? But if you are talking about unpaired electron, that means single electron or lone pair, बहुत सारे वर्डिंग्स आप यूज कर सकती हो इसके लिए। आप लोन पेयर भी कह सकती हो इसको, ठीक, या आप इसको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कह सकती हो। What do you think? Is it stable to have unpaired electron or is it unstable? I think it What is is stable or stable. unstable? Like stable is like when the shell is complete. With 8 electrons, right? Yeah, Okay. octet is complete. Okay. So can we say that stable compounds are non-reactive or unreactive? Can we say that? Yeah, we can because they cannot like give or take. Like they cannot take any electrons. Like they Exactly. cannot do And if reaction. they are unstable, what is going to happen? Like they can share like electrons. Or maybe donate or maybe gain, right? Yeah, So if the electrons are unpaired or any atom having lone pair electron, that means this electron is going to obviously share or maybe lose electron, maybe gain one electron, कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉसिबिलिटी है। या तो ये एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा, या तो ये एक मजीद इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ताकि ये अपना पेयर कंप्लीट कर सके, या मे बी इट इज गोइंग टू शेयर, डू द म्यूचुअल शेयरिंग विद एनी अदर एलिमेंट, राइट? yeah, सो दिस इज कॉल्ड एज अनस्टेबल। और अनस्टेबल बोलूं मैं, या मैं ये बोलूं कि दिस atom becomes more reactive. Why? Because it is going to try harder for the mutual sharing of electron, or maybe to lose the electron or to gain the electron. It's just trying harder to make a bond with any other atom. ठीक है, let's say it is chlorine, and chlorine is having an unpaired lone of, या lone pair of electron या unpaired electron। तो क्या करेगा क्लोरीन जो है वो कोशिश करेगा कि भाई किसी और एटम के साथ bond बनाए, मे बी अनदर क्लोरीन, मे बी हाइड्रोजन, मे बी एनी एलिमेंट, एनी एटम दैट इज सुटेबल फॉर क्लोरीन। क्यों? ताकि ये अनपेयर्ड को क्या कर सके, पेयर कर सके या म्यूचुअल शेयर कर सके और स्टेबल हो सके, राइट? टू गेन द स्टेबिलिटी इट इज गोना ट्राई हार्डर टू मेक बॉन्ड ईदर आयनिक और कोवेलेंट। तो अनस्टेबल का मतलब रिएक्टिव भी होता है। और अनस्टेबल कब होगा कोई भी एटम? व्हेन इट इज हैविंग अ लोन पेयर और इट इज हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। This is called free radical. So if the reaction, listen to this very carefully, if the reaction is very slow, let's say we have an example of rusting of iron, or maybe the chain reaction. Do you know what the chain reaction or light reaction is? like the carbon has like this ability Yeah. to form chains. And how is it gonna happen? Let's say we have example of CH3Cl. It's called as methyl chloride. ठीक, I'm just giving you a random example. You don't have to memorize it because it's a portion of organic chemistry. कार्बन के पास यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है. It is bonded with 3 hydrogen atom and 1 chlorine atom. And if you're talking about the light or chain reaction, what is going to happen next? One hydrogen is being removed or replaced by another chlorine. So the formula would be like CH2Cl2, right? Yeah.
and the chain goes on. Hydrogen is further going to be replaced with chlorine, with chloride ion. It would become CHCl3, and then it would become CCl4, which is called as carbon tetrachloride. So this is what the chain reaction is. Hydrogen is being replaced by chloride ion, and the chain goes on, and it takes like years to complete this reaction. So the reaction is extremely slow. To speed up the reaction, what is the priority? How can you speed up the reaction? Can you name any one technique or method to speed up the reaction? Heating. Heating, yes. And Heat and I have don't you, know that. have you ever heard about the term catalyst? Yeah, I have it. Yeah. So what are catalysts? Like it catalyzes the reaction. Can it only speed up the reaction? Can it slow down the reaction as well? It depends upon like what you are using it as a catalyst. Exactly. So if you are talking about the slow reaction, it's gonna speed up the reaction, right? Yeah. So catalysts are basically divided into two categories, positive catalyst and negative catalyst. If the whole reaction is being speed up or the catalyst is speeding up the reaction, the catalyst is called as positive catalyst, and if it is going to slow down the reaction, it is called as negative catalyst. Why am I mentioning this term? Because these free radicals are actually acting as catalyst over here, and they are going to speed up the reaction. That means to speed up the reaction or to increase the rate of reaction, we can obviously use catalyst in the whole reaction, or we can make free radicals and make them unstable by having lone pair or unpaired electron, and then they would become reactive and the reaction would become faster as compared to the speed they were having, right? Yeah. So this is about free radical. The free radicals भाई होते क्या हैं? They are only going to speed up the reaction. How? Because they are having lone pair or unpaired electrons, and obviously ये unpaired और lone pair electron अपने आप को stable करने के लिए reactive हो जाएंगे. Reactive कब होंगे? क्यों होंगे? Because they are going to make bond with any other atom. और इस तरीके से free radicals की वजह से जो पूरा reaction है which was a slow reaction, वो speed up हो सकता है. Because the catalyst is one of the option, and then we have free radical which can speed up the reaction. So there's a question arise कि भाई ये फ्री रेडिकल बन कैसे रहे हैं? You have any idea? ये फ्री रेडिकल ऐसे ही तो नहीं आ जाएंगे ना. अब ये जो अनपेयर्ड या लोन पेयर है ये आ कैसे रहा है? फ्री रेडिकल बनाएंगे कैसे हम? I don't know. Aren't they naturally like vehicle like or Naturally. they can extract like electrons? अच्छा, okay. Do you remember we have discussed before about the ground state and excited state, that electrons are moving from the Yeah, ground? yeah. Yeah, so that's the actual process when there could be a source could be light. ठीक है, लाइट हो सकती है सोर्स, या शायद सोर्स हो सकती है कोई भी ऐसी ऐसी सोर्स विच आर हैविंग इलेक्ट्रॉन्स इन देमसेल्व्स, लाइक इलेक्ट्रॉन बीम. ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम का मतलब एक रे है, रे ऑफ लाइट है विच इज हैविंग इलेक्ट्रॉन. तो एनी सोर्स विच इज हैविंग इलेक्ट्रॉन बीम, we can strike this electron beam with the atom, right? And the electrons here would be excited from the ground state and shifting towards the excited state, right? So they are moving from the ground state to the excited state. That is exactly what is going to happen here. If you're talking about chlorine atoms, and let's say chlorine is the basically slowing up the reaction, and the reaction is being slowed up by the chlorine, or but the fast करना reaction or slow reaction because of the chlorine, right? So what we are going to do here, we are going to do the striking or bombardment. The term is bombardment. बॉम्बार्डमेंट मतलब ऑब्वियसली टकराना, कोलाइड करना, कोलिजन. ठीक है, बॉम्बार्डमेंट कहलाता है. तो इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्डमेंट कहलाएगा ये. यानी आई एम गोइंग टू यूज द सोर्स which is having electron beam, and I'm just letting this electron beam to strike or bombarded or collided with chlorine atom. What's gonna happen next? जो last shell में electrons होंगे chlorine के, obviously they will be bombarded by electron beam. ठीक, ये इलेक्ट्रॉन बीम है.
ये यहाँ पे आके स्ट्राइक करेगी क्लोरीन एटम को, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स वुड बी मूविंग फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट, राइट? एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट, इस तरीके से शेल्स हैं, ऑब्वियसली मैंने एक ही बनाया। तो ग्राउंड स्टेट से जब एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो इज इट इट इज पॉसिबल कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन सारे मूव ना कर पाए, एंड दे विल बी इन लोन पेयर फॉर्म और अनपेयर्ड फॉर्म, यानी इलेक्ट्रॉन भी मारे है, ठीक है, उसने स्ट्राइक किया आगे किसको, क्लोरीन एटम को, और उसने एक फ्री रेडिकल बना दिया क्लोरीन का, यानी दो रेडिकल बन गए अब। एक क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया और एक क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया। आई थिंक आपने ये फिजिक्स में पढ़ा होगा, द रिएक्शन इज कॉल्ड एज, आई थिंक, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन पढ़ा होगा अगर आपने। Yeah. हाँ, तो इट्स बेसिकली, इज इट फिजन और फ्यूजन? It is fusion. Fission is like a different thing. It is, I think, fusion. Yeah, fuse together, that means combine together, but it's not fusion, it's fission, right? One chlorine atom is being divided into two different radicals, free radicals. How? Because of the striking or because of the bombardment of electron beam, and the source could be anything. Light हो सकती है, कोई भी ऐसी फॉर्म जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, करंट हो सकता है ऑब्वियसली बिकॉज देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन करंट। तो ये बात समझ आई है, फ्री रेडिकल्स आर बीइंग फॉर्म जस्ट टू स्पीड अप द रिएक्शन, हाउ, बाय द bombardment of electron beam, and free radicals is one of the techniques other than catalyst to speed up the reaction. Did you get the topic? Yeah, uh, I understood what you. Okay. Any other question? No, no question. Okay, so you have homework for tomorrow is like making the formulas, and obviously you are gonna revise the trend. Okay, I'm just sharing the slide as well. ठीक है भाई, हम जो कवर कर चुके हैं, एक सेकेंड, ये सब हमने कवर कर लिया है। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ क्या रिवीजन करने। ये चीज़ जो हमने पढ़ी थी पीछे, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम के अंदर हमने पढ़ा था अटोमिक एंड आयनिक रेडियस, ठीक है। आप इसको रिवाइज करोगी लाजमी, क्योंकि इसी की बेसिस पे हमने कुछ और ट्रेंड्स भी पढ़ने हैं। एटॉमिक रेडाई वाज वन ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है, जो हमने डिस्कस की थी कि अक्रॉस द पीरियड और अक्रॉस द ग्रुप किस तरीके से डिक्रीज इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और उससे फर्क क्या पड़ रहा है, रिएक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या इफेक्ट होगा। ये हमने एक प्रॉपर्टी की थी। इससे रिलेटेड अभी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो हम एग्जैक्टली इसी तरीके से डिस्कस करेंगे कि डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, और बहुत सारी तीन चार प्रॉपर्टीज है जो हम पढ़ेंगे। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है बेटा आपको? Yeah, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। thank you. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।